So life में one of the most trickiest things to do is to improve something without actually ruining it. And today I have a similar example to give. So welcome the MG Hector CVT. This car was introduced in the Indian market last year, and as the name suggests, it gained a new CVT transmission, but along with that it gained a host of new updates, and today I'm going to talk about each one of them. So stick around for the next few minutes and I'll let you know if this car is worth your money or not. So first of all, इसके exterior changes की बात करें तो as you can see, मतलब दिखने में वैसे ही है, बट देयर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू ग्रिल. इसे डायमंड स्टडेड ग्रिल का डिज़ाइन दिया गया है, एंड द ओवरऑल डिज़ाइन में भी समहाउ रिमाइंड्स ऑफ द एमजी एस्टर एज वेल. Now apart from the grille, बाकी सारे elements as you can see, LED DRLs which also work as indicator, headlamps and fog lamps, they're exactly the same. Not talking about the side profile, as you can see it has gained new and larger wheels. अब पुरानी गाड़ी के अंदर आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते थे, बट इस गाड़ी में आपको 18 इंच व्हील्स मिलते हैं. बट इसके साथ साथ as you can see the car has also gained new dual tone theme, which for me I think it looks spectacular. Now coming out of the rear section, as you can see ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है. ये गाड़ी पुरानी गाड़ी जैसी ही दिखती है, बट एक मेन एलिमेंट जो इसमें चेंज किया गया है वो था, पुरानी इसमें कनेक्टेड लाइट्स थी पुरानी गाड़ी में, बट नई लाइट्स के अंदर as you can see एक ब्लैक स्ट्रिप आपको मिलती है विद अ क्रोम एडिशन ओवर हियर. Now as soon as you sit inside the cabin of this car, you'll see that overall cabin space वैसा ही है जैसे पुरानी वाली गाड़ी में था, बट थोड़ी बहुत इसमें भी चेंजेस की गए हैं. So now you get optional beach fox upholstery. इसके साथ साथ passenger seat can now also be adjusted electrically. Now apart from that, other key highlight inside the cabin of the Hector CVT include the use of cooling options for both the front seats, and इसके साथ साथ it also gets wireless charging, which makes it at par when you compare it with the other segment rivals. Now one of the key highlights inside the cabin of the Hector CVT is of course the use of this super huge tablet light screen, which is placed right in the middle. It keeps you entertained and provide you with all the information that you might need. It can be connected with Apple CarPlay. It also has Android Auto connectivity, and of course it also displays the individual tire pressure on each and every wheels that you have inside this car. Now it can be made slightly more intuitive and slightly more responsive, but I'm only nitpicking here. Now for me, another winning highlight inside the cabin of the Hector is the use of this super huge sunroof, which is of course one touch. हेक्टर की सेकेंड रो सीट का दरवाज़ा काफ़ी वाइड खुलता है, तो इवन ओल्डर ऑक्यूपेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए. अंदर बैठते ही आप फील करेंगे कि स्पेस काफ़ी उम्दा है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है, एंड इसके साथ साथ लेग रूम की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है. आपको हैंड रेस्ट की सुविधा भी मिलती है, जिसके अंदर आप अपने कप्स को प्लेस कर सकते हैं. सेकेंड रो सीट्स में आपको 2 सेपरेट AC वेंट्स मिलते हैं, उसके नीचे आप अपना मोबाइल फ़ोन प्लेस कर सकते हैं. ओवरऑल दिस स्पेस इज़ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल इवन फॉर 3 पीपल. बूट की बात करें तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, एंड इट ओपन्स अप स्पेस फॉर द सेगमेंट लीडिंग 587 लीटर्स ऑफ बूट. एंड अगेन यू जस्ट हैव टू टैप वन बटन एंड इट क्लोजेस डाउन इन स्प्लिट सेकेंड्स. So here I am finally driving the Hector CVT, and to put down some numbers, to put down the engine figure, it delivers power from a 1.5 liter 4-cylinder engine. It is a turbo petrol engine, and it delivers 143 bhp maximum power at around 5000 rpm, and this power is backed up by 250 Nm peak torque, which is recorded from as low as 1600 rpm. Now one of the key highlights of this engine is its new 8-speed CVT transmission. Hector is an SUV that's designed for an audience that likes to be ferried around in comfort. एंड ये हासिल करने के लिए कंपनी ने इस गाड़ी के इंजन को इस तरह से ट्यून किया है कि इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टू ड्राइव कार्स इन दिस सेगमेंट. एंड अब करते हैं इसका एक्सेलरेशन टेस्ट. 3, 2, 1, here we go. Okay, nice. 80 km/h, as you can see. Now as soon as I flow down the pedal, it took some time to really get going, but I think the transmission was smooth enough and it was spot on. So इसका ट्रांसमिशन कब गियर शिफ्ट करता है पता ही नहीं लगता.
काफ़ी स्मूथली सब कुछ होता है बिना ड्राइवर को एहसास कराए, एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हेक्टर फील्स सो रिफाइंड। मतलब इवन आप फुल गैस पे हो तो भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता ये इंजन, एंड रिफाइनमेंट लेवल तो इस यूनिट का अच्छा है ही। Now talking about the handling over the corners, it might not be the sharpest, but it sure is fun. It is in fact quite nimble for the kind of size that it has. And whenever you're taking that corner fast, you do have that body roll that you might find in big SUVs, but it's still decent for the kind of size that this car has. Now the suspension setup on the Hector is tuned to be slightly oriented towards the comfort driving, so you can absolutely pedal it out on the rumble strips and you will stay at comfort. Not much will be filtered out inside the cabin. आप हेक्टर को एग्रेसिवली चलाना चाहोगे तो भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, एज इट हैंडल्स प्रिटी वेल, बट बड़ी गाड़ी होने के कारण थोड़ा हैवी ज़रूर फील करती है। बट असली मज़ा तो इसके पीछे वाली सीट्स में फैल के बैठने का ही है, एंड ऑफ कोर्स इसका कैबिन जो कि सेगमेंट राइवल से भी बेटर स्पेस, प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट प्रॉमिस करता है। So my day comes to an end with the Hector CVT, and I will admit that it was a very fun day indeed. And the addition of CVT transmission has made it a more compelling proposition. Pricing की बात करें तो 16.20 से लेके 19.28 तक आपको CVT ऑप्शन इस गाड़ी में अवेलेबल होने वाला है, बट आई विल एडमिट दैट प्राइसिंग थोड़ा और एग्रेसिव हो सकता था टू मेक इट इवन बेटर पैकेज। बट ओवरऑल मॉडल ईयर अपडेट की बात करें तो ये गाड़ी इसके पुराने वर्जन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। So that's all in the show today, guys, and do give this video a thumbs up and do share it with your friends. That's all in the show today. It's goodbye for now, and as always, drive safe.